Good morning, students. Welcome to our business law class. This is Anupama Labhe, and today's topic of discussion is registration of partnership firm. In previous lecture, we discussed regarding the meaning of partnership firm, the types of partnership firm and the kinds of partners. Today we are going to discuss the procedure of registration of partnership firm. So let us see what is the procedure for registration. The procedure for registration of partnership firm were first laid down in chapter 7 of the present act, that means Companies Act 2013. Before that, there is no such provision for registration of a partnership firm. But this chapter 6 of present act laid down certain procedure if the state wants to register its partnership firm. Each state has been empowered by section 56 of this act. And this act says that if the state is willingly accept this provision, then only it can make it compulsory for its partnership firm to get it registered. As in Maharashtra, the state government accepted this provision and make it compulsory for every partnership firm to get it registered. So it is not mandatory for the state to compulsorily make the firms get its registered. ठीक है? तो ये क्या है? ये चैप्टर 6 में जो प्रेजेंट एक्ट है उसके चैप्टर 6 में रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर को बताया हुआ है और ये पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि क्या दे वांट टू मेक इट कंपल्शन फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट इट रजिस्टर्ड। तो ये जो है सेक्शन 56 gives the right to the state to decide whether it wants to make it compulsory for the partnership firm to get it registered or not to get it registered. But section 57, that means each state government has been empowered by section 57 to appoint a registrar of firms and define its jurisdiction. 56 lays down, that means the 56 gives the permission to make the state compulsory to the firms to get it registered. लेकिन 57 जो है वो एम्पावर करता है टू अपॉइंट द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी करना है कि नहीं ये बताता है। इफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स इट then it empowers the state government, that is central government empowers the state government under section 57 the procedure for appointing the registrar of the firm. जैसे हमने देखा है कंपनीज एक्ट में एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्ट्रार, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट इट रजिस्टर्ड। इसलिए जिस स्टेट ने ये कंपल्सरी किया है उन्हीं के लिए सेक्शन 57 जो है वो इम्प्लीमेंटेबल है। और ये 57 बताता है हाउ टू अपॉइंट द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। यहाँ पे भी जिस स्टेट ने ये कंपल्सरी किया हुआ है वही स्टेट रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट करेगा। अदर स्टेट्स आर नॉट under any obligation to appoint the registrar for partnership firm. Then क्या है procedure for registration? These are all the provisions laid down under the act for that means accepting the registration, appointment of the registrar, and now we will discuss what is the procedure for registration of the firm. The first one is the name of the firm. If your partnership firm wants to get it registered, then it has to follow certain rules and regulations. The first rule is deciding the name of the partnership firm. आपने register नहीं किया है तो you are at option to choose any name for your partnership firm. But if you accept, that means you are going for registration of your partnership firm, then you must follow this rule for deciding the name of your partnership firm. उन्होंने कहा है कि जैसे कि एम्पायर है, क्राउन है, किंग है, क्वीन है, ऐसे नाम यू कैन नॉट कीप फॉर योर पार्टनरशिप फर्म। तो दिस मस्ट बी फॉलोड व्हाइल कीपिंग द नेम फॉर योर पार्टनरशिप फर्म। देन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म।
आप कहाँ पे आपकी फर्म जो है उसका प्रिंसिपल प्लेस मीन्स रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, दैट यू हैव टू मेंशन इन योर application form, the application which is given by you to the registrar of the firm. Obviously स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने कंपलसरी किया हुआ है, रजिस्ट्रार कहाँ का होगा, महाराष्ट्र का ही होगा। तो इसलिए आपको जैसे हमने देखा था इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में, you just have to mention the state where you are going to register your company. लेकिन here what is compulsory, you have to mention the place where you are going to register your partnership firm. That is the main difference between the that means place of business. ठीक है, कंपनी लॉ में क्या देखा, कंपनीज एक्ट में हमने क्या देखा था, you have to mention only the state. आपको सिर्फ स्टेट बताना है. If you are going to register your company in Maharashtra, then only the Maharashtra is sufficient for getting the certificate of incorporation. लेकिन if you want to get the certificate for your partnership firm, then what is compulsory? You have to mention the address. That means the state, the city where you are going to going to start your business. Then the name of other places where the firms carries on its business. हो सकता है महाराष्ट्र में आपने इनकॉर्पोरेट की है आपकी पार्टनरशिप फर्म, बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म टू कैरी ओनली योर बिजनेस इन महाराष्ट्र. आपके पास क्या है, आप महाराष्ट्र के बाहर जाके भी आपका बिजनेस कर सकते हो. तो you have to mention the other places where you are carrying out your business. ठीक है, हो सकता है आपने महाराष्ट्र में किया है, लेकिन हो सकता है आप यूपी के कोई गांव में या उसके कोई सिटी में यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट्स, या हो सकता है कि आप कहीं और यूपी है, एमपी है, उत्तराखंड है, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, आपके बिजनेस यानी आपकी एक्टिविटीज जो है वो कैरी आउट कर सकते हो. तो कहाँ कहाँ पे आप करने वाले हो, दैट यू हैव टू मेंशन इन योर एप्लीकेशन. देन द डेट ऑन विच ईच पार्टनर जॉइन द फर्म. क्या है, यू हैव टू मेंशन द डेट. डेट क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म तो आपने रजिस्टर किया है, लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इज ऑल्सो परमिटेड. सो इफ ऑल द पार्टनर्स आर नॉट एडमिटेड एट द सेम डेट, देन यू हैव टू मेंशन which partner joined the firm on which date. तो ये आपको यहाँ पे बताना जरूरी है. Then the name in full and permanent address of the partners of firms. As you have seen in your incorporation of company, you have to mention the name, the signature and the address of the subscribers to the memorandum. वैसे ही यहाँ पे क्या आपको mention करना है, the name and address of your partners. Then the duration of the firm. हमने पहले देखा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें क्या देखा था हमने, फिक्स्ड है, ये है जैसे एट व्हील है, स्पेसिफिक वेंचर को परफॉर्म करने के लिए आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो वो कैसा है, यू हैव टू मेंशन हियर. ठीक है, फिर और भी इसके कंटेंट्स रहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड. उसमें व्हाट विल बी द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विद द पार्टनर्स हु विल कैरी ऑन द बिजनेस. दैट मीन्स एनी पार्टनर can carry on behalf of other partners or all partners can do the business. तो आपको ये भी mention करना है what will be the profit sharing ratio, and as you have to mention the profit sharing ratio, and now it is compulsory to mention the loss sharing ratio. ठीक है, तो ये भी आपको कहाँ पे बताना है, in your partnership deed. Partnership deed means जैसे कि हम लोग कहते हैं कि क्या promises दे रहे हो एक दूसरे को. अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो व्हाट विल द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द पार्टनर्स, दैट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड. इज इट ओके? तो ये क्या है, दिस पॉइंट्स मस्ट बी कवर्ड इन योर एप्लीकेशन विच यू आर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ योर फर्म. ये आने ही चाहिए. इफ योर एप्लीकेशन इन एनी वे इज इनकम्प्लीट, then the registrar has a right to deny the registration of your partnership firm. Okay? तो what is the need of for registration? जैसे कि पहले मैंने बताया है, it is not mandatory. क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है whether to get your partnership firm registered or not. In Maharashtra, you do not have that choice, but in other states you have choice whether you want to get it registered or you want to start your partnership firm without registration. लेकिन ऐसे कुछ बताए उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस, इफ़ यू डोंट गो फॉर रजिस्ट्रेशन तो आपको कुछ राइट्स है जो डिनाई किए जाते हैं. तो इनडायरेक्टली व्हाट द
गवर्नमेंट वांट टू टेल यू दैट इट इज़ बेटर टू गेट योर फर्म रजिस्टर्ड, ठीक है। तो क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। If your partnership firm is registered, then it is a evidence that the partnership firm is in existence. बराबर है? That is reliable evidence and conclusive proof of existence of partnership firm. क्या है प्रूफ, क्या है? जैसे कि समझ लीजिए कि आपने किसी को किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। दैट मीन्स द लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो क्या हो गया, आपके पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो थर्ड पार्टी डिनाई कर सकती है दैट देयर वेर नो एनी कॉन्ट्रैक्ट विद दिस फर्म। तो इफ यू गो फॉर रजिस्ट्रेशन देन इट इज अ रिलायबल एविडेंस एंड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। देन क्या है, पार्टनर्स आर लायबल फॉर देयर लायबिलिटी इवन इफ फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी जो है वो डिनाई कर सकती है कि ऐसी कोई फर्म ही नहीं है, क्यों, और आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो पार्टनर्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म जो है दे आर स्टिल लायबल इवन दो द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, दे आर लायबल टू द थर्ड पार्टी, दे कैन नॉट डिनाई देयर लायबिलिटी। बराबर है, वो अपनी लायबिलिटी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये रूल ही है। आपने पार्टनरशिप फर्म को इनकॉर्पोरेट किया है, आपने पार्टनरशिप फर्म को बनाया हुआ है, और उसके बाद you are responsible for the third party, even though the third party is not responsible toward the firm as well as towards the partners. What is the next one? For filing all those suits arising from contracts. If your partnership firm is registered, then the firm or the partners has a right to file the suits arising from contracts. Why you want to file the suit? हो सकता है the third party is denying the contract or third party fails to perform their duties. Then if your firm is registered, then only the partners or the partnership firm can file a suit against that particular person. Unregistered firms जो है, that means the partners of unregistered firms cannot file suit against the firm to confirm their rights, confer their rights. जैसे कि if your partnership firm is not registered, then the partners do not have any right to get their rights. जैसे कि they are not entitled to demand their share in the profits of the firm. अगर बाकी के पार्टनर्स समझ लीजिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पार्टनर है, उसके साथ कोई बाकी के जो पार्टनर्स है वो उसके जो राइट्स है वो उसे नहीं दे रहे हैं। Then in such a circumstances or in such a situation, that particular partner do not have any right to file a suit against the remaining partners or against the firm. ठीक है, when if your partnership firm is not registered. लेकिन अगर वो registered है तो every partner has a right to file a suit against the partners as well as against the partnership firm. Then the unregistered firm cannot file suit against present or past partners. जैसे कि पार्टनर भी कोई फाइल सूट नहीं कर सकता है पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में या पार्टनर्स के अगेंस्ट में। इन द सेम वे द अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट इट्स पार्टनर्स। इज इट ओके? देन द लास्ट वन इज अगेंस्ट थर्ड पार्टी। क्या है? इफ the third party fails to fulfill its promises or breach its contract with the firm, then the firm cannot file a suit against the third party in a court of law. So, to avoid all these consequences, it is better to get your partnership firm registered. So, this is all about the registration procedure and consequences of non-registration of partnership. Okay, thank you.